Okay, now indicators are useful as long as we know how to use them. And to know how to use them, it is extremely important to know what they are. So we've been discussing about moving averages. It gives a structure to the chart. I keep on saying this sentence over and over again. Essentially a lagging indicator which helps me to give us a confirmation about whether the trend is up or down. Bas, itna hi. We can use moving averages to buy and sell, which is the dual moving average crossover system. But if we don't do that, if we, let's say, do pullback trading, then how can we add any other separate different indicators to make our life better? Now, indicators ka main job is to indicate, not tell us to buy and sell. It will just give us one information, one bit of information. उस bit of information को कैसे हम लोग समझ के trading में use करेंगे, that is the job of the trader. Indicators don't make the trader. Traders exploit and understand the indicator better. So आपको क्या चाहिए? What is that you want from the chart? The way I see it, there are multiple things, but generally I talk about when I even take sessions and I teach about indicators of various aspects. For any kind of trader, you should ask your charts three different aspects. This is, I think it makes sense. वो आपके trading को help भी करता है, or it makes you also a better learned trader, not just a random trader. आप सोच समझ के trading कर रहे हो. Trend of the market, momentum of the market, volatility of the market. इसको छोड़ के और भी 2-3 aspects हो सकते हैं, sentiment हो सकता है, relative strength हो सकता है, volumes हो सकता है. But उनको अगर completely ignore भी कर दे, completely ignore करें, और if we want to create a template, अगर हम ऐसे एक charts create करना चाहते हैं जो charts देख के हम लोग trade करेंगे, तो उस charts में क्या होना चाहिए? मैं जानना चाहूंगा what is the underlying trend of the chart. मैं जानना चाहूंगा कि उस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में अंडरलाइंग मोमेंटम का सपोर्ट है या नहीं है. एंड ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगा कि बाजार हाईली वॉलेटाइल है या नहीं है. इनफैक्ट इस तीनों में से अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग, अगर मुझे किसी भी चार्ट, किसी भी एसेट क्लास का कोई भी चार्ट को अगर डिफाइन करना है, तो वो डेफिनेशन इन तीनों से नहीं आता है. वो डेफिनेशन प्राइमरीली इन दोनों से आता है. प्राइमरीली It can be an uptrending non-volatile, मतलब धीरे धीरे टुक 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 करके ऊपर जा रहा है. आप अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स को देखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. अब वो अपट्रेंडिंग वॉलेटाइल हो सकता है, मतलब ऊपर जा रहा है लेकिन डीप करेक्शंस मारता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से डीप करेक्शन, ऐसे करके ऊपर जा रहा है. सो इट इज इन एन अपट्रेंड बट इट्स वॉलेटाइल. अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, अ स्लो स्टेडी लो वॉलेटाइल अपट्रेंड इज दिस. एन अपट्रेंड बट हाईली वॉलेटाइल इज दिस. दोनों अप ट्रेंड है, बट दोनों का अंडरलाइंग वोलेटिलिटी डिफरेंट है. सिमिलरली यू कैन हैव फॉर व्हाट द डाउन ट्रेंड. इट कैन बी स्लो एंड स्टेडी डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूअस सेलिंग, कोई बाउंस बैक कुछ खास है ही नहीं. इट कैन बी अ डाउन ट्रेंड बट एक्सट्रीमली वोलेटाइल, वो सीधा ऊपर की तरफ बाउंस मार के नीचे गिरता है. ये भी डाउन ट्रेंडिंग नेचर है बट हाईली वोलेटाइल. और लास्ट टू, एक हो सकता है कंप्लीटली रेंज बाउंड, एक छोटे से रेंज के अंदर मड़ा पड़ा है. It's just a range bound market, and it can be range bound and it can be extremely volatile in a very wide range. आप लास्ट 1-1.5 साल का कोटक बैंक का वीकली चार्ज देखेंगे, डेली चार्ज देखेंगे, आपको एक वैसा भयंकर ह्यूज वाइड रेंज दिखेगा. सो इफ यू हैव ट्रेडेड फॉर सम टाइम, और अगर आपने चार्ट्स पे कुछ टाइम स्पेंड किया है, तो आपको ये सब दिखेगा. और ये जो आपको दिखेगा, दे टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द चार्ट, और इट टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द चार्ट. करेक्ट? नाउ यू टेल मी that is it right that you apply and try to make money in all the 6 different types of charts? No, right? The ones which is easy, relatively easy to make returns are which one? Low volatile uptrend, low volatile downtrend. Ekdam perfect. Capture the trend and try to ride the trend. The next level of difficulty comes from the high volatile up and high volatile down, because ये trend तो है, इसका एक direction है, but वो गिरता भी जोर से और फिर से उछाल देगा. So little difficult, but still at least उसका एक दायरा है, उसका एक trend है. And then where we get really frustrated is when you're stuck in a range bound market. You know, if you have ever got stuck in a range bound market, वो range से निकलता ही नहीं है. How do we make money within that? Right? So indicators
The job of indicators is to help us to figure out what kind of a state. जो मैं चार्ट्स देख रहा हूं, अगर आप मुझे अभी राइट नाउ अगर आप मुझे पूछेंगे, लेट्स टॉक अबाउट सीमेंस. आई डोंट नो कहां से सीमेंस दिमाग में आया. If you ask me what about Siemens, the moment I will open the chart of Siemens in my particular template, I will have some rules, some indicators, which will, number one, I will see what is the trend of Siemens. Then I will see ये जो uptrend है क्या ये volatile है या non volatile है. Then मैं check करूंगा क्या इसमें momentum है या नहीं. So the job of the indicators is to answer or give me information about various elements of the chart. उस various elements को जब हम जोड़ेंगे, when we add them, the reading, the analysis of the chart seems to make sense. कि हाँ, Siemens एक low volatile uptrending zone में है. इसका मतलब यहाँ पे trend following tools, breakout tools डाल सकते. लेकिन यही सेम चार्ट Siemens इसके पहले एक एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रेंज बाउंड मार्केट में. क्या यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर काम करेगा? इम्पॉसिबल. क्या यहाँ पे कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग ब्रेकआउट सिस्टम काम करेगा? नॉट अ सिंगल वन. एवरी वन ऑफ देम विल फॉल. एवरी वन विल बी अ फेलियर. एवरी वन विल गेट स्टॉप्ड अप. यहाँ पे कॉन्ट्रा काम करेगा. रेजिस्टेंस पे बेचिए, रेजिस्टेंस के एरिया पे बेचिए, सपोर्ट्स के एरिया पे खरीदिए. सो कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है ये तो तभी समझ में आएगा जब बाजार जो चार्ट है वो किस दायरे से गुजर रहा है उसको समझना जरूरी है. यहाँ पे आप कॉन्ट्रा करके दिखाइए, आपका लॉस होगा. तो ये जानना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही इंडिकेटर्स डालना चाहिए. सो मूविंग एवरेज के साथ क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी यूज विद द मूविंग एवरेज? समथिंग लाइक एन RSI, which is a range, which is an oscillator. Matlab it works really well in a range bound market. It works well if you know how to use it in a trending market also, but wahan nahi jate. I'll stick myself to just RSI and tell you a little bit. Whenever you plot RSI, by default like 14 period RSI aata hai, correct? And RSI is an oscillator. Oscillators are really useful during the range bound markets. And when I can clearly see, all that I have to do is figure out the reading of RSI, which is above a certain threshold or below a certain threshold. These are the areas where I would look to buy and sell. Then there are concepts of divergence. मतलब moving average is a trend indicator. मैं फिर से दोबारा trend indicators नहीं डालना चाहूँगा. मैं इसके अंदर maybe RSI जो मुझे underlying momentum, जो मुझे range bound market trade करने में help करेगा, जो मुझे divergences बताएंगे, it will help us to tell us the divergence, especially in a rising market or falling market. You can bring Bollinger Band, you can bring in ATR, average true range, उससे आपको underlying volatility, range expansion, contraction का भी एक अंदाजा हो जाएगा. So when you choose these indicators are many. So confuse होने के लिए काफी scope है. But only make a choice which will make your analysis complete, which will make your analysis more meaningful, so that whenever you open a chart, the first thing that you figure out is this chart trending or not trending? What is the nature of the trend? High volatile, low volatile? And then you come to the point कि किस तरह का strategy इसमें इस्तेमाल हो सकता है. फिर जाके आप trade ढूंढिए. But ऐसा नहीं होता है. होता क्या है? पहले ही आप trade ढूंढते, फिर जब वो सही जाता है इट्स फाइन, लेकिन जब वो गलत जाता है फिर आप उसका ट्रेंड देखते, फिर आप उसका वोलेटिलिटी चेक करते, फिर आप उसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ढूंढते. आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट वे टू ट्रेड. आई थिंक यू विल अग्री विथ मी. अ बेटर वे टू डू इज एनालाइज इट टू द टू द कोर एंड देन इम्प्लीमेंट. सो व्हेन इट कम्स टू अदर इंडिकेटर्स, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट that you can make a combination of moving averages with RSI. And if you're keen, you can add something like an average true range for volatility, या फिर आप Bollinger Band को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Bollinger Band का एक फायदा ये होगा कि Bollinger Band एक moving average के 7 standard deviations को ऐड करता है, तो it has an angle of trend as well as range expansion and range contraction.